हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। आज पढ़ा क्लास 11 रो फ्रिक्शन रो क्लास नंबर 2। हेलो हाय नमस्ते केमिति अच्छो पिला माने समस्ते। चलो पाठ स्टार्ट करिवा हमर क्लास नंबर 2। ऑलरेडी फ्रिक्शन विषय पढ़ी सारी। फ्रिक्शन कौन थिला पिला माने जेते बेले गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी रो सरफेस ऊपर मूव करिवो तार अपोजिट डायरेक्शन रे फ्रिक्शन काम करिवो। माने गोटे बॉडी जदि एपट को मूव करुच्चे देन तार अपोजिट डायरेक्शन रे फ्रिक्शन काम करिवो। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रे देखिथिले तो कौन फ्रिक्शन कौन थिला तीन प्रकार रो कौन थिला कौन थिला कहलो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन जेते गोटे बॉडी स्टार्ट करिवो मूव करिवा सेटा को हमें कहउथिले स्टैटिक फ्रिक्शन। जेते मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ता हबो सेटा को कहउथिले लिमिटिंग फ्रिक्शन। जेते गोटे सैचुरेशन मूवमेंट पळि आसीबो मींस गोटे कांस्टेंट रे चलिबो फ्रिक्शन टा सेटा को कहउथिले हमें काइनेटिक फ्रिक्शन। तापर ग्राफ भी देखिथिले तापर लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिथिले। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय रिएक्शन और फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हिच इज अपोजिंग टू द बॉडी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी देखिथिले। एबे देखिवा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एबे कोन देखिवा एंजल करियोनी हला पिला माने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंजल डू आजिकल दूर ही रहबो पो पिला माने एंजल। तो एंजल इज डेंजरियस और इंजुरियस फॉर हेल्थ फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन द एंगल बिटवीन the resultant of friction and normal reaction is known as angle of friction। देखो गोटे बॉडी अच्छी मास m तार वेट हम m इंटू g से ए डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाइड करले ता अपोजिट डायरेक्शन रे फ्रिक्शन आसिला। तो रिएक्शन कौन नॉर्मल रिएक्शन इज कौन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। एटा कौन रिजल्टेंट कार रिजल्टेंट फ्रिक्शन आउ रिएक्शन रो कार प्लान फ्रिक्शन आउ रिएक्शन। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द angle of friction defined as angle of friction को केन डिफाइन करि परिबा as the angle which माने जो एंगल टा कोन हेतिबो जो एंगल टा the resultant which the resultant of the limiting friction the angle which the resultant of limiting friction and the normal reaction हाँ नॉर्मल रिएक्शन भीतर एंगल है मैक्स विथ द नॉर्मल रिएक्शन मीन्स आम जदि सिंपली कहवा द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो जदि आम कौन डब्ल्यू इटा डब्ल्यू नहीं जावा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी मास ऑफ द बॉडी आर इक्वल टू कौन आर इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एट फर्स्ट मैक्सिमम देदा। तो एफ एस मैक्सिमम कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन तापर कौन एफ अप्लाइड फोर्स। वेल तो आम कौन चाहते जदि यहीटा को नहीं गले पिला गोटे
रिजल्टेंट हम तो मुझे नहीं गली ओ ए बी सी नहीं गली ओ बी तो ये एंगलटा बहुत छोट एंगलटा तो एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू छाड़ देछि पिला माने से लिखिबा तो एटा कोन बहुत छोट सेइथि हमें tan थीटा नेबा ला कोन एंगल बिटवीन resultant and normal reaction माने सेटा कोन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहबा तो जो देखिबा नाउ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो बहुत छोट अपोजिट डायरेक्शन सर कौन है tan थीटा tan थीटार फॉर्मूला कौन पिला माने p बाय b तो ये p कौन अच्छी f ऑफ r तो ये जदि f ऑफ s है ये भी f ऑफ s गोटे जदि पैरेललोग्राम तो यहाँ कौन हम देख सामनाटा हम परपेंडिकुलर ये हम बेस तो कौन f ऑफ s मैक्सिमम बाय r f ऑफ s मैक्सिमम बाय r तो आम कौन देखिले tan थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन देखिले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो आम ये कौन पाइले एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जदि पिला माने एडु थीटार वैल्यूटा काढिबा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ s मैक्सिमम जोड़ा के लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन लेकिन पिला माने तो जीवा नेक्स्ट टॉपिक पिला माने जोश रखो जुनून है तो जोश है तो मुमकिन है तो सक्सेस है कामयाबी है तब जी नेक्स्ट टॉपिक आमर कौन हम पिला माने एंगल ऑफ रिपोज तो फ्रिक्शन पिला माने many times friction opposes but sometimes friction is supportive माने बहुत केस रे आमर फ्रिक्शन डा अपोज करे बट समटाइम्स कौन करे सपोर्ट करे तो एटा कौन द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन ए बॉडी प्लेस ऑन जस्ट ए बिगिन टू स्लाइड माने जेते बेले गोटे बॉडी गोटे इंक्लाइन सरफेस रही सडन स्टार्ट करिवो मूव से एंगल लागू कहवा आमे एंगल ऑफ रिपोज गोटे इंक्लाइन सरफेस अच्छी जार एंगल है फाइ से गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी तार वेट नहीं जावा एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन डा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस जदि देखिबा बॉडीटा कौन हम पिला ए डायरेक्शन रे मूव करिवो तो फ्रिक्शन डा को पड़े तार अपोजिट डायरेक्शन रहिबो एफ फ्रिक्शन डा अपोजिट डायरेक्शन रहिबो तो सेटा को लिमिटिंग फ्रिक्शन ने एफ कैन स्टार्टिंग मैक्सिमम टा हबो तो एबे देखिले mg cos थीटा रो गोटे वर्टिकल कंपोनेंट आसीबो गोटे तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आसीबो तो एटा जदि काढिबा ए एंगल ला कोन जदि फाई हुए तो mg cos फाई ए एंगल ला कोन हबो mg sin फाई तो ए एंगल ला कोन हबो mg cos फाई mg sin फाई केमिति देखो एटी जदि मोटे ट्रायंगल एज्यूम करले पिला माने तो एटा मोर बेस तो cos फाई इक्वल टू जदि काढिबा कोन हबो बेस बाय हाइपोथेनियस तो बेस इज इक्वल टू
h cos phi तापर sin phi जदि काढ़ा sin phi इज इक्वल टू p by h परपेंडिकुलर by hypotenuse तो p जदि काढ़ा कौन आइब p इज इक्वल टू h cos phi तो h केते अच्छे पिला माने mg सी गला mg cos phi तो ये हाइपोथेन्यूस अच्छी mg को एडी सॉरी एडी sin phi लिखिया कथा एटा sin phi ये भी कौन आसियो mg sin phi आसियो हला पिला ने बुझी गेलो तो एबे जीवा हमर तो mg cos phi mg sin phi किन आसला तो एटा कोन इट इज द मिनिमम angle that an inclined surface it is the minimum angle एटा उठे minimum angle that an inclined surface है जो inclined surface टा अच्छी कौन inclined surface makes with the माने से एंगल ला का सहित करो makes with the horizontal when the body or object and when the body just start to sliding body placed on just begins to slide माने इमिदी गोटे एंगल थी माने गोटे सरफेस जोटी रखु रखु कौन हो सडन स्लाइडिंग करिवाटा स्टार्ट हो जिवो तो एडी जदि देखिबा देखो लेट m equal to mass of the body find angle between inclined plane or surface with horizontal ए फाइटा नहीं गले हैला तो देखो फोर्स कौन कौन एक्टिंग करछे केमते देखो फर्स्ट जे देखा weight of the body is downwards to the center of earth एटा कौन सेंटर ऑफ अर्थ को से रोचे देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन f of s तो देखिए f of s and f s maximum limiting friction is upward direction because the body is sliding डाउनवर्ड बॉडीटा कौन होचे डाउनवर्ड करछे हेतु से कौन हो मोशन होचे डाउनवर्ड तो कौन एबे देखिबा द mg makes two rectangular component mg cos phi and mg sin phi कौन ये दीटा कंपोनेंट होची mg sin phi तो कौन होची mg sin phi टा का को बैलेंस करची फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin phi balances the f of s max limiting friction को कौन करची बैलेंस करची को सहित along the plane सहित कोर्स मीन्स f of s maximum is equal to mg sin phi आ कौन mg cos phi कौन mg cos phi को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करची हला mg cos phi balances the r कौन r को बैलेंस करची व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द
which is perpendicular to the inclined surface means r equal to mg cos phi. तो इक्वेशन 1 ये हला मोर इक्वेशन 2 एबे कोन करिया पिला ने इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 इक्वेशन डिवाइडिंग equation 1 with equation 2 means कौन कर ली mg sin phi by mg cos phi तो इटा कौन है सेपटा कौन आछे f of s maximum is equal by r तब सॉरी तो mg कटि गला अब कौन कहला sin phi by cos phi तो f of s maximum by r sin phi by cos phi कौन आसला पिला माने tan phi is equal to f of s maximum by r तो एटा कौन हला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is equal to एंगल ऑफ कौन आइला tan थीटा भी इक्वल हला तो एटा कौन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एबे कौन देखिले जे angle of repose is equal to coefficient of friction or equal to angle of friction तो coefficient of friction जहाँ angle of repose रो value ताहा angle of friction रो भी value ताहा लेकिन ये पिला मैंने नोट लिखिन था तो जीवा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखि पाउन पिलाने मुझे कहीं आमर बहुत गुड़ा टॉपिक गुड़े गोटे सर्ट टाइम पीरियड पढ़ुं से कौन कर पॉज करी नोट जहाँ लिखार अच्छे लिखि नहीं था एबे देखिवा जदि एबे कौन देखिवा टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एबे देखिवा टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन there are two types of kinetic friction there are two types of kinetic friction there are two types of kinetic friction. One is sliding friction, another one is rolling friction. One is sliding friction, second one is rolling friction. काइनेटिक फ्रिक्शन केते प्रकार अछि पिला माने दी प्रकार गोटे स्लाइडिंग आ गोटे रोलिंग फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन टा केते का जेते बेले गोटे बॉडी फ्रिक्शन स्टार्ट करिवो केते बेले आ गोटे बॉडी ऊपर स्लाइड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन force of friction एटा force of friction दा कौन हो force of friction that comes into play or run when a body starts sliding over another body गोटे बॉडी जो आउ गोटे बॉडी ऊपर स्लाइड करवा स्टार्ट करिवो से कंडीशन रे कौन हम से आम स्लाइडिंग करवा तो आर एग्जांपल जदि देखिबा कौन ए वुडन ब्लॉक स्लाइड्स
over a surface गोटे सरफेस ऊपर स्लाइड करवा तो काठटा घसी घसी जीव सेटा हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट देखिए रोलिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट कौन रोलिंग फ्रिक्शन एटा कौन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन the force of friction that comes into play when a body starts rolling over another body माने जेतले गोटे बॉडीटा एटा गोटे बॉडी व्हील माने गोटे चक्काटा ये कौन रोल करिया स्टार्ट हम माने आगो को मोशन हम से रोल करियो तो कौन हम फ्रिक्शन मींस आर एग्जांपल देले ए व्हील माने गोटे चक्का ए व्हील रोल ओवर ए रोड सेटा हो स्लाइडिंग सॉरी आमर रोलिंग फ्रिक्शन हो तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन फ्रिक्शन कि व्हेन ए व्हील रोल्स विथआउट स्लीपिंग माने स्लीप हो कौन हम ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन द सरफेस एट कंटाक्ट डर नॉट रब इच अदर माने जो रोल हम कंटिन्यूअस रोल हो गला कौन से टच कमी जीव तो टच कमिले कौन आ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम ना से केस कौन हम रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट इज 0 if there is no slipping time no static friction takes place in the ideal situation लिखी दो होला तो चल लास्ट टॉपिक करी आज क्लास स्टार्ट कर एंडिंग करिया लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कौन लॉ ऑफ rolling friction. The rolling friction is directly proportional to the normal reaction. कौन the force of rolling friction is directly proportional to the normal reaction means Fs proportional to R एटा को नेले इक्वेशन 1 तो तापर कोन it is inversely proportional to the radius of rolling cylinder or wheel first point एटा थला second inversely proportional to the radius of the rolling object जो rolling object टा थिबो तार कोन हो रेडियस सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एटा है गला सेकंड इक्वेशन जदि कंबाइनिंग दीटा जा करिया तो एटा को r नहीं जा f of r proportional to reaction by radius तो कोफिशिएंट उठ लगियो f r equal to mu r by r mu of r दे दवा तो कौन mu of r is equal to coefficient of rolling friction
लिखिन पिलाने तो ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ମାନେ ବୁଝି ବି ପାରୁଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଆମର ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ Thank you and have a good journey of your study. Have a good day.